Hello everyone, welcome back to my channel. I am Pragati and I am helping you in your KVS journey or any other teaching exams. So, as you all know, mains are over now, but all we are doing is just lying on the bed, scrolling, overthinking कि shortlist होंगे या नहीं. I would request instead of doing all of this, why don't you prepare for the interview? Yes, KVS interviews are the most competitive stage where you can get selected or eliminated. So, early preparation is the best thing you can do for yourself, and I'm here to help you on that. इन माय ओपिनियन चाहे वो कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो, कोई टीचिंग एग्जाम्स हो या फिर कोई कॉर्पोरेट जॉब्स हो, किसी भी इंटरव्यू के लिए देयर आर टू पिलर्स. फर्स्ट इज योर कंटेंट, योर नॉलेज, एंड द सेकंड इज योर पर्सनालिटी. ऑफ कोर्स टीचिंग में वी हैव वन मोर पिलर which is the demo part. We will talk about it later. So now in this video, I will go one on one to each and every pillar and decode it for you so that it can help you in your preparation and you can get your name on the final list. So stay tuned. Now we will talk about the first pillar. पहला पिलर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस भी है, बट इट्स नॉट एन ईजी जॉब. द फर्स्ट पिलर इज योर कंटेंट नॉलेज. ऑफ कोर्स आप सभी ने मेंस दिए हैं और आप उसमें शॉर्टलिस्ट हुए हैं. इसका मतलब है कि आप बहुत ही अच्छे लेवल पर अपना कंटेंट प्रिपेयर कर चुके हैं. बट माइंड यू, जो भी आपका मेंस का नॉलेज है या मेंस की जो भी आपकी प्रैक्टिस है, that will not exactly help you in the interview, because in the means you must have seen question which are like 2 marks, 3 marks or 4 marks, but in the interview you will get some of the question which may be factual, may be application based, and of course they will not be directly from your book. Then how you have to prepare? Let's deep dive into it. जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे डायरेक्टली ये नहीं पूछेंगे कि मेक अ डायग्राम, यू नो, या फिर फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल. नो, they will test your basics, and there is nothing better than an NCERT where you can prepare your basics. I would request to refer NCERT for the levels you are giving your interview. For example, if you're going for TGT interviews, please prepare 6 to 10th by heart NCERT. And then if you're going for PGTs, then please prepare your NCERT of 11th and 12th. Of course, you have to be thorough with your 9th and 10th, but in addition, you have to understand and read those NCERT very carefully for the class 11th and 12th. और जब हम मेंस प्रिपेयर कर रहे थे, तो हमारा किताबों को पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंस था. अब जब हम इंटरव्यू प्रिपेयर करेंगे, तो हमें उस बुक से जब भी हम उसको लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, वी हैव टू नोटिस और गेज दोज पार्ट स्पेसिफिकली दैट कैन बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू. हाउ विल यू गेज दोज पार्ट स्पेसिफिकली? सी, इन द इंटरव्यू जो भी आपके पैनल मेंबर्स हैं, जो भी वहाँ पर टीचर्स बैठे हुए हैं, जो भी प्रिंसिपल्स बैठे हुए हैं, दे आर हाईली एजुकेटेड. सो एनी काइंड ऑफ ब्लफ और एनी काइंड ऑफ गेसिंग, दे विल नोटिस इट. आपको क्या करना है? इंस्टेड ऑफ गेसिंग, इंस्टेड ऑफ ब्लफिंग, you have to either say yes to the question or the opinion whatever they will ask you, or you can just say, ma'am, I will read about it, I will learn more about it. Okay. So when you are reading your NCERT, आप हमेशा जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप उसमें ये नोटिस करने की कोशिश कीजिए कि क्या यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है. So be mindful what are you consuming in the NCERT also, but be very thorough. I would suggest please be very thorough with the basics. क्योंकि बेसिक्स ऐसे होते हैं ना, भले ही हम डिटेल्ड चैप्टर्स भूल जाएं, बट वी नेवर फॉरगेट द बेसिक्स. और बेसिक्स आर द वेरी गुड मेथड टू टेस्ट द पर्सन इफ दे नो द कॉन्सेप्ट और नॉट. सो जो भी बेसिक लॉज हो, सेल्स जैसे सेल चैप्टर है, उसके जो भी बेसिक नुआंसेस हैं वो आपको पता होने चाहिए. लेट्स से इन बायो फिजिक्स में जो भी लॉज हैं, जो भी बेसिक फॉर्मूलाज हैं, जो भी बेसिक एप्लीकेशन है किसी थ्योरम के या फिर किसी भी फिजिक्स के लॉ के, दैट मस्ट नो. Then coming to chemistry, periodic table is very important, and periodicity chapter is also very important because a lot of questions comes from there, that why this happening, because interview questions are basically start with why. They rarely start with what. So this is just a initial part of the preparation of your content of the interview, which is the NCERT or your subject. The other part which is also important is your pedagogy. Now again, pedagogy knowledge will also change how you have attempted in the mains and how will you apply into your interviews. जो भी आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस होंगे ना, दे विल बी मोर लाइक एप्लीकेशन बेस्ड, कि
वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप किसी साइंटिस्ट ने जो भी आपको थ्योरीज़ दी हैं वो बताइए। व्हाट दे कैन आस्क यू इज़ दैट कि आपकी क्लास में एक यू नो गिफ्टेड चाइल्ड है एंड हाउ विल यू आइडेंटिफाई? आपकी क्लास में एक स्लो लर्नर है एंड हाउ विल यू आइडेंटिफाई? एंड द रेमेडीज़, they will give you scenarios that you have to judge and apply your brain to hit there and give the answer. First they want a sane person to to the post, that is not very theoretical, that is not only only bookish knowledge they have. They are looking for the person who has the ability to apply those concepts जो भी उन्होंने books में पढ़ा है. So be ready for those kind of questions. आपने जो भी थ्योरीज पढ़ी हैं ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन टाइम और इन योर प्रिपरेशन टाइम, बी रेडी टू अप्लाई देम. आप खुद से सिनेरियोज बना सकते हैं कि इस थ्योरी का एप्लीकेशन कहाँ पर है, या इस एग्जाम्पल को मैं कहाँ पर मैं खुद से बोल सकता हूँ, या अगर इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है. इस टाइप्स के अगर आप इस माइंडसेट से अगर आप बुक को पढ़ेंगे या उन थ्योरीज को या जो भी आपका कंटेंट है उसे पढ़ेंगे, तो आई विल से कि उससे आपको थोड़ी हेल्प होगी. The other part is your current affairs. Of course, you must be thinking that there is no, requirement for the current affairs in the teaching exams. But I have seen in my experience that they ask you not specifically the current affair, the Russia war or the Ukraine crisis or all of those, the fuel crisis, of course, but they will ask you any current affairs which is related to teaching, which is related to a student, which is related to education. You must be very thorough with all the laws, all the policies like the NEP and all the, you know, small or big initiative or the scheme run by the government specifically in your state. This shows that you are not only the teacher of book, but you are a teacher of awareness, which is very, very important when you are going to a board like KVS. पैनल के जो लोग होते हैं वो आपको वहाँ पर डराने के लिए नहीं है. ऑफ कोर्स दे वांट यू. आई हैव बीन देयर एंड आई हैव सीन दैट कोई भी पैनल मेंबर ये नहीं चाहता है कि आप आंसर्स ना दें. दे ऑल वांट यू टू आंसर, दे एनकरेज यू टू आंसर. सो इफ यू आर अगर आपने थोड़ा भी यहाँ पर एफर्ट डाल दिया, ऑल्दो हमें लगता है कि मेंस हो गया है तो वी हैव हमने सबसे बड़ी जंग जीत ली है, बट आई मस्ट टेल यू दैट मोस्ट ऑफ द पीपल जो इस स्टेज तक आए हैं वो फाइनल शॉर्टलिस्ट तभी होंगे जब वो इस इंटरव्यू को क्रैक करेंगे. सो दिस इंटरव्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, व्हिच इज़ योर एनसीईआरटीज़, योर पेडागोजी नॉलेज एंड योर करंट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसके साथ ही जब भी आपका इंटरव्यू शुरू होता है ना, ऑफ कोर्स दे हैव योर सीवी और द रिज्यूमे और द बायोडाटा यू प्रोवाइड देम, एंड दोस पैनल मेंबर्स गेज थ्रू इट. वो आपसे आपके स्कूल के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. लेट्स से आप केवी से हैं या फिर आप जेएनवी से हैं, सो दे कैन आस्क यू क्वेश्चन अबाउट दैट कि हाउ वाज योर लाइफस्टाइल, व्हाट यू हैव लर्न देयर एंड हाउ कैन यू सर्व ऑल ऑफ दोज थिंग्स. इफ यू आर फ्रॉम स्पेसिफिकली किसी हेरिटेज प्लेस से हैं आप, तो वो आपसे उस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं. So be prepared with your biodata as well. जिस जो भी आपने जहाँ से भी आपने स्कूलिंग वगैरह करी है, कुछ भी इंटरेस्टिंग जो आपके डाफ में से बन सकता है, दे कैन आस्क यू, दे हैव बीन आस्किंग इट. So be mindful that these are the things you have to be very, very careful about: your NCERT knowledge, your pedagogy, and your current affairs. And of course, don't forget your biodata that you are giving to them. With this, I am signing off this video, but I will meet you in the next one with the second pillar of the preparation. Till then, bye bye, take care, stay tuned.